everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examination. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस वीडियो में and in this particular video we are going to analyze important news articles from the Hindu 15th June 2025 Sunday edition. Okay, a quick disclaimer, we have only kept the articles which are important from your exams perspective, though each and every article of this particular newspaper is very good and interesting to read, including the editorials. Okay, all right, so let's proceed further with our first news. Center sets a panel to frame air crash response guidelines. So everyone, if we talk about this particular article, the context of this article is the Ahmedabad airplane crash. Okay, all right. So we have seen news about this particular incident in the Saturday and Friday editions as well, right? So if we talk about this particular article, it says that a high-level committee is set up, which will be headed by Home Secretary. Okay, तो आपको पता होना चाहिए that Air India का AI-171 जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था अहमदाबाद में, right? तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में कल हमने बात की थी या सैटरडे के एडिशन में हमने देखा था कि ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया था उस पर्टिकुलर प्लेन का, राइट? एंड आज के एडिशन में जो संडे का एडिशन है उसमें ये न्यूज आई है दैट अ हाई लेवल कमेटी इज सेट अप, राइट? और ये हाई लेवल कमेटी जो है इसको हेड कौन करेगा? इसे होम सेक्रेटरी हेड करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट, अभी ये जो कमेटी है ये क्यों बनाई गई है, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज फॉर्म्ड टू ड्राफ्ट comprehensive aviation accident response guidelines after the plane crash. Okay, all right. तो ये जो आपकी कमेटी है, हाई लेवल कमेटी है, वो बनाई क्यों गई है? so as to draft comprehensive aviation accident response guidelines. Okay, all right. कि अगर कहीं पर भी कोई एविएशन एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनके बाद क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस का सेट जो है वो ये ड्राफ्ट करने वाली है ये पर्टिकुलर कमेटी. ओके, ऑलराइट. नाउ एज पर दिस आर्टिकल, committee is going to focus on standard operating procedures, that is SOPs, okay, for accident prevention and response, with the report due in 3 months. Okay, all right. Now remember, if we talk about this particular report or this particular committee, it is not going to replace the other investigations which are going on already. Okay, तो जो already AAIB और गुजरात पुलिस के joint वेंचर में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, राइट? वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगा. ये जो आपकी हाई लेवल कमेटी है ये रिप्लेस नहीं करेगी उन इन्वेस्टिगेशंस को. ओके, ऑलराइट. रिमेंबर वन थिंग दैट इफ यू टॉक अबाउट द मेन प्रोब, इट रिमेन्स विद द AAIB. ओके, ऑलराइट, जिसने ब्लैक बॉक्स जो है वो रिकवर किया है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कमेटी, एज पर दिस आर्टिकल, इट इज टास्क्ड विद इवेल्युएटिंग इमरजेंसी रेस्पॉन्सेस इंक्लूडिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन so as to enhance post crash management. Okay, all right. तो ये कमेटी का काम क्या है? जो इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे होने चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, ये सब चीजों को ये एनालाइज करेगी कमेटी so as to enhance the post crash management. Okay, all right. Now if we talk about this particular committee, as per this article, this committee has access to all the flight related records including the flight data, cockpit voice recording, maintenance details, air traffic logs and the witness testimonies. Okay, so though this particular committee is not going to replace any other investigation already going on, right, but iske paas access है सारे flight related records की. Okay, now if we talk about this committee, it is going to conduct the site inspections, interview the relevant personals including crew, air traffic controllers, and can also collaborate with the international agency if there will be need. Okay, all right. So yeah everyone, this is about this particular article. Let's proceed to the next news article. Okay, now this news is coming from Madhya Pradesh. ओके, ये एक एमपी की न्यूज़ है और इम्पॉर्टेंट है. ओके, इफ़ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर MPPSC देन ये वाला न्यूज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. ओके, ऑलराइट. तो इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज़, ये एमपी के बालाघाट रीजन से है. ओके, ये भी आपको पता रहना चाहिए. ओके, ऑलराइट. सो अभी सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, जो वेरियस सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो हैं वो मध्य प्रदेश के बालाघाट में कंडक्ट किए जा रहे हैं और उन्हीं वन ऑफ इन दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी ऑपरेशन 4 माओइस्ट्स आर किल्ड. ओके, ऑलराइट. कहाँ पर? इन बालाघाट मध्य प्रदेश. ओके, जिनमें से 3 ऑफ देम वर वुमेन. ठीक है, तो 3 क्या थे? वुमेन थे, 3 महिलाएं थी और
एक पुरुष था इसमें। ओके, ऑलराइट। अभी देखिए ये न्यूज़ तो ठीक है, बट इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट जो हमको यहाँ से जान लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी वो कंसेप्ट क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं, माओइस्ट। ओके, ऑलराइट। नाउ इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग ऑलरेडी तो ये आपको पता होगा। ओके, बट दिस इज फॉर समवन हु इज जस्ट अ बिगिनर। ओके, ऑलराइट। सो इफ वी टॉक अबाउट माओइस्ट, या, so it the background of this particular term, okay, comes from China. Okay, all right. So there was a Chinese leader, Mao Zedong. Okay, so this concept comes from him. All right, but if we talk about it in a more practical senses as per the aspect of India, ठीक है, तो हम अगर माउस के बारे में बात करें तो याद रखिए कि माउस जो है ना वो एक कम्युनिटी है। इट इज एक्चुअली अ form of community or people belonging to a community that aims to capture the state power. Okay, form of community that aims to capture state power, state power. Okay, all right, through armed, let me write it over here, armed insurgency and mass mobilization. ओके, ऑलराइट। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में, आसान से शब्दों में। अगर हम माओइस्ट्स के बारे में बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो ऐसे कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आई एम सो सॉरी, हियर्स अ करेक्शन, फॉर्म ऑफ कम्युनिटी इट इज एक्चुअली, ठीक है, ऑलराइट। तो ये माओइस्ट जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो स्टेट के पावर को कैप्चर करना चाहता है, बट थ्रू आर्म्ड इंसर्जेंसी एंड मास मोबिलाइजेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये चाहते हैं कि इनको किसका कंट्रोल मिल जाए, स्टेट के पावर का कंट्रोल मिल जाए। ओके, अगर हम इनकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, सो इट इज टू यूज वायलेंस एंड आर्म्ड इंसरेक्शन। ओके, ऑलराइट। तो ये स्टेट पावर को कैप्चर करना चाहते हैं वाया वायलेंस, ओके, एंड आर्म्ड इंसरेक्शन। तो ये आपको पता होना यहाँ से जरूरी है, ठीक है। तो 4 माओइस्ट्स आर किल्ड इन एन ऑनगोइंग सिक्योरिटी ऑपरेशन इन बालाघाट मध्य प्रदेश एंड 3 ऑफ देम वर women. Okay, all right. अभी ये जो थे ये किस रीजन के थे? एज पर दिस न्यूज आर्टिकल दे बिलोंग टू मलाखंड यूनिट ऑफ जीआरबी, गोंदिया, राजनांदगांव एंड बालाघाट डिवीजन। ये भी आपको पता होना चाहिए। बट आपने जैसे ऑब्जर्व किया ही होगा कि कल बहुत भारी बारिश हो रही थी जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। ओके, और ये ऑपरेशन अभी भी ऑनगोइंग ही है। ओके, ऑलराइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ये जो ऑपरेशन है ये कौन कंडक्ट कर रहा था? मध्य प्रदेश हॉक फोर्स एंड सीआरपीएफ जॉइंटली। ओके, ऑलराइट। तो ये जॉइंट ऑपरेशन है किस किस के बीच में? एमपी हॉक फोर्स एंड सीआरपीएफ। ओके, अभी यहाँ से एक बात आपको और जान लेनी जरूरी है कि भाई ये हॉक फोर्स क्या। Yes, so one more thing which is very important for you to understand that what is this hawk force, है ना। तो याद रखिए that if we talk about hawk force ये एक स्पेशल कमांडो यूनिट है एमपी की। ओके, स्पेशल कमांडो यूनिट। ओके, ऑलराइट। सो ये स्पेशल कमांडो यूनिट है एमपी की, याद रखने वाली बात है। तो हॉक फोर्स एंड सीआरपीएफ का ये जॉइंट ऑपरेशन था, याद रखिएगा। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अम्यूनिशन रिकवर्ड, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट अम्यूनिशन? बिकॉज वी नो दैट देयर द आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म इज टू यूज वायलेंस एंड आर्म्ड इंसरेक्शन, है ना। तो इनसे जो अम्यूनिशन मिला वो था अ सेल्फ लोडिंग राइफल, 2 315 rifles and a grenade launcher. Okay, now if we talk about the chief minister of Madhya Pradesh, he hailed this operation and termed this operation as a major success in the campaign to end Maoism by March 2026. Okay, now this March 2026 is actually a deadline that is set by the union government to end Maoism. Okay, all right. So I believe we are very clear with this particular news article. Let's proceed to the
नेक्स्ट न्यूज, जयशंकर urges ईरान इजराइल टू अवॉइड एनी एस्केलेटरी स्टेप्स। ओके, तो अभी कल के ही एडिशन में हमने देखा था दैट इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ती ही जा रही है, राइट। सो आर एक्सटर्नल चीफ मिनिस्टर एस जयशंकर हेल्ड डिस्कशन विद ईरानियन एंड इजरायली काउंटर पार्ट्स, यानी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने इसराइल और ईरान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उनसे बात की है। ओके, ऑलराइट। Now, after the conversation of the external affair ministers of Israel, Iran, and India, a conversation took place between PM Narendra Modi and Israeli PM Netanyahu. Okay, on call, and PM Modi urged early restoration of peace and stability in the Gulf region. If we talk about Jaishankar, that is our external affair minister, he conveyed global concerns. He urged de-escalation and a return to diplomacy. And if we talk about Iran, Iran also shared its perspective on the situation. Okay. Now, this particular talk, as per this article, occurred after Israeli strikes on Iran, targeting nuclear research centers, followed by Iranian missile and drone attacks. Okay. Now, if we talk about the Iranian External Affairs Minister Araghchi, he visited India earlier in May for Indian-Iran Joint Commission meeting, and it was his first visit since he assumed office in August 2024. Okay. Now, if we talk about Indian community, so there are 30,000 nationals, Indian nationals in Israel, 10 million Indians expatriates in Gulf, including Iran. Okay, alright. तो इतने ही भारतीय जो हैं वो अभी इन countries में हैं. Okay, Gulf में around 10 million Indians हैं. Now, if we talk about helpline numbers, so Indian Embassy has provided helpline emergency helpline number for Israel. It is plus 97254 7520 711, plus 97254327839, and for Iran it is plus 989128109115 and plus 989128109109. ओके, तो अगर आपके भी कोई रिलेटिव हैं जो इन पर्टिकुलर नेशंस में है या गल्फ में है, राइट, तो यू कैन ऑल्सो शेयर दिस emergency helpline numbers to them. Okay, all right. So this is about this particular article. Let's move to the next article, which is very interesting. Okay, all right. If you are someone who loves science, then this is very very interesting. Okay, तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, एंड इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, देन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टू नोट. ओके, सो फ्रॉम कर्नाटका's देवरायन दुर्ग, दैट इज एलिफेंट हिल. ओके, तो कर्नाटका में एक एलिफेंट हिल है, वहां पर साइंटिस्ट्स ने एक नई जंपिंग स्पाइडर स्पीशीज जो है वो डिस्कवर की है. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पीशीज? स्पार्टियस कारिग्री. ओके, ऑलराइट, रिमेंबर दिस नेम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ साइंटिफिक नेम. ओके, ऑलराइट. सो साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीशीज स्पार्टियस कारिग्री. ओके, ऑलराइट. नाउ रिमेंबर दैट ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज मिली है ना, पहले इट इज लाइक टिल नाउ इट वाज बिलीव दैट इट इज ओनली फाउंड इन Southeast Asia and Africa. Okay, but now if we talk about this particular species Spartius carigri, okay, it is found in Karnataka also. Okay, now if we talk about the family, it belongs to Spartianae family. Okay, now if we talk about this subfamily, it is known for intelligent hunting and web invasion tactics. Remember that. Okay, all right. तो याद रखिएगा कि ये जो स्पीशीज अभी स्पाइडर की मिली है, इट इज अ न्यू जंपिंग स्पाइडर स्पीशीज. ठीक है, जो कहाँ मिली है? कर्नाटका के एलिफेंट हिल में. ठीक है, स्पार्टेनेई फैमिली को बिलोंग करती है, सब फैमिली को बिलोंग करती है, और ये जो पर्टिकुलर फैमिली है वो इंटेलिजेंस हंटिंग और वेब इन्वेजन टेक्निक्स के लिए जानी जाती है. ओके, ऑलराइट. दिस मार्क्स द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ जेनरा स्पार्टियस एंड सोनोइता इन इंडिया, previously found only in Southeast Asia and Africa. Okay, if we talk about the male spiders, okay, they are spotted in rocky crevices while the females were guarding egg clutches in the wild. Okay, if we talk about the additional specimens as per this report, they are found in Tamil Nadu's Viluppuram district. Okay, now if we talk about this particular research, it was led by John Caleb TD. Okay, he belonged to Savita Medical College. Please have a note of it. This name is very very important. Okay,
All right. So, who led the research? John Caliptidi. He belonged to Savita Medical College. He published it in the European Journal of Taxonomy on June 11. Okay. And if we talk about the collaborators were experts from Zoological Survey of India, Wildlife Aware Nature Club, Sacred Heart College, and independent researchers. Okay. All right. So, this news article was also very, very important. Let's move to the next one. Arunachal declares 2025 to 35 as decade of hydro power. ओके ये important है. ओके ऑलराइट. तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश ने जो डिकेड है फ्रॉम 2025 टू 2035 इस डिकेड को डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर डिक्लेयर किया है. ये आपको याद रखना है. क्यों? सो दैट टू हार्नेस 58,000 मेगावाट पोटेंशियल. Okay, all right. So for this particular decade or for this decade of hydropower, as per this article, the focus will be on strategic revenue management from free power. That is, अभी ये distribution आपको बहुत पता होना चाहिए. ये बहुत important distribution है. 12% from each hydroelectric project plus 1% from local area development fund. Okay, all right. So if we talk about the revenue management free power के लिए वो कैसा होगा? 12% hydroelectric project से, हर एक hydroelectric project से, और plus 1% for the local area development fund. Okay, all right. Now if we talk about the expected annual revenue, तो ये जो particular project है इसके बाद जो expected annual revenue है वो क्या होगा? 4,525 crore by 2035. Okay, following the investment of 2 lakh crores over 10 years for 19 gigawatt capacity. So please have a note of it. ठीक है. तो यहाँ से मेजर बात क्या निकल कर आ रही है? That अरुणाचल प्रदेश has declared 2025-2035 as decade of hydropower to harness 58,000 megawatt potential. Please have a note of it. ये revenue का distribution भी आपके लिए जानना जरूरी है. Okay. Now escrow accounts are also approved for effective financial management of hydropower revenues. अभी यहाँ पे एक term आ रहा है ना, escrow accounts. Escrow accounts. Okay. Now what is the meaning of escrow account? क्या होता है भाई escrow account का मतलब? ठीक है, ये भी तो हमारे लिए जानना जरूरी है ना. तो देखिए, इफ यू टॉक अबाउट एस्क्रो अकाउंट, नो, इट इज एक्चुअली अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट वेयर देयर विल बी अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी. ओके, इफ देयर इज वन पार्टी एंड द अदर पार्टी, देन देयर विल बी अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी. ओके, जिसे हम कहेंगे एस्क्रो एजेंट. ओके, ऑलराइट. तो जो एस्क्रो एजेंट रहेंगे, दे आर गोइंग टू मैनेज एंड होल्ड द फंड्स इन बिहाफ ऑफ the parties participating. Okay, for instance, if A party is participating and B party is participating, okay, तो ये A और B पार्टी के बीच में एक न्यूट्रल पार्टी रहेगी. वन यहाँ पे आप मैं रेफर कर रही हूँ. ठीक है, और ये जो न्यूट्रल पार्टी रहेगी ना, ये न्यूट्रल पार्टी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एस्क्रो एजेंट. इसको क्या कहा जाएगा? एस्क्रो एजेंट. ओके, और ये जो एस्क्रो एजेंट है ना, ये क्या करेगा? फंड मैनेज करेगा. ओके, एंड फंड्स को होल्ड करेगा. ओके, so I believe we are very very clear. Let's talk about some project, that is Siang Upper Multipurpose Project, if we are talking about Arunachal Pradesh. So as per this article, cabinet urges dialogue with affected families, addressing concerns over 11,000 megawatt dam meant to counter China's 60,000 megawatt project upstream in Tibet. If we talk about the urban planning directives, so formation of new Yingkong and new Geku Development Authority for future ready alternate towns have set up, and also compensation and rehabilitation framework is also being prepared. Okay, so yeah everyone, let's proceed further with the next article. I believe we are very very clear with this one. So yeah, this news is very very interesting if you are a if you're a cricket lover, this news is very, very important for you. And this news is literally very, very important because as we have already discussed, that World Test Championship is going on, right? And South Africa defeated Australia by 5 wickets at Lords. Okay, so this was their first major ICC title. South Africa chased 282 runs, finishing at 282 by 5 on the fourth day before lunch. If we talk about Aiden Markram, so he hit century, 136 not out, and his century anchored the chase, bringing South Africa within 6 runs of victory. So if we talk about key moments from the match, Bavuma dismissed by Pat Cummins, ending a 147 run stand with Markram. If we talk about Markram hit, it was very very crucial. So Markram hit several crucial boundaries of Cummins and Hazelwood. If we talk about Australia, so Mitchell Starc bowled Tristan Stubbs for 8 with a sharp delivery. And if we talk about South Africa, so when they just needed 6 runs, okay, Hazelwood dismissed Markram. On the other hand, if we talk about
Kylie. So he hit the winning run, completing the second highest test chase at Lords. Okay, all right. So remember that Markram was a star performer. So he scored 136. Oh, and when South Africa just needed six more runs to win, okay, he got bowled. He got out by Hazelwood. Okay, so I believe we are very very clear with this news. Let's proceed further. Arya Arjun pair brings home mixed air rifle gold. So we have already talked about the shooting championship that is going on in Munich, Germany. Okay, so now that particular championship is concluded, and we stood third. Okay, China topped the table list. Norway stood second, and we finished third with two gold and two bronze. Okay, so this is very very important. If we talk about India's Arya Bose and Arjun Babuta, they won gold in 10-meter air rifle mixed team event, and they defeated China. If we talk about other Indian performers, Manu Bhakar, Aditya Malra, they placed sixth in 10-meter air pistol mixed team event. Suruchi Fogart and Varun Tomar finished 10th, and Elvinil Valverian and Sifat Kaur Samra, they won bronze in women's air rifle and rifle three position events. Okay, so I believe we are very very clear with this particular news also, and this is very very important. Okay, all right, coming from the sports segment, let's move ahead. So yeah, this was our last news for the day. I hope you enjoyed this particular video, and I hope this video is going to be fruitful for your preparation. Till the next time we meet, keep hustling, keep growing, and yes, please feel free to post your feedbacks and suggestions in the chat box. Until next time, please take care, and yes, keep growing.